I, Dr. Vedic Pratap, Assistant Professor, Faculty of Law. I welcome all of you on my own behalf and on behalf of वैदिक विज्ञान केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संपूर्ति सत्र अर्थात वैलिडिक्टरी सेशन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। 2 दिन का ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसकी तकनीकी सत्र अभी समाप्त हुआ, इसकी समाप्ति के बाद इससे क्या निकलता है, इसकी क्या रिपोर्ट है और इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये तो इस वैलिडिक्टरी सेशन में हमारे और आपके बीच संवाद से स्पष्ट होगा। आए हैं आप सभागार में तो कुछ बेहतरीन बातें हुई, जमी पे चाक कहाँ रोज रोज निकलते हैं। आप लोग के आने से, आप लोग के विद्वतापूर्ण उद्बोधन से हमने जो महसूस किया, हमें लगा कि शायद ये विषय इतना दुष्कर नहीं, इतना कठिन नहीं, जिसके बारे में पता नहीं क्यों या तो भ्रम फैलाया जाता है या हम जो विधि के विद्यार्थी हैं उनको हमेशा इस बात से दूर रखा जाता है। मुझे आश्चर्य होता है एक विधि के विद्यार्थी होने के रूप में, जब हम लोग विधि शास्त्र का विषय पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं, मुझे याद है यहाँ सभी विधि के विद्यार्थियों को याद होगा, पहला ही चैप्टर होता है पेंथम, उसके बाद होता है केल्सन, ऑस्टिन। कहां गए हमारे वो विधि शास्त्री जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं? क्या यह एक उचित फोरम नहीं हो सकता कि जहां से हमने पढ़ना शुरू किया, जहां से हमने विधि के ABCD को सीखा, काका को सीखा, वहां से हम उन विषय की शुरुआत करें, वहां से हमारे मन में एक श्रद्धा आए, एक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा आए कि हमें इस विषय को समझना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व पटल पर यह आ सके, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो शायद इस दिशा में यह प्रयास यहां से एक शुरुआत की गई है और आप सभी विद्वत जनों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप जहां भी रहें, जहां भी जाएं, इस प्रयास को, इस छोटे से प्रयास को अपने स्तर पर आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में हमें यह कठिनाई ना हो। हमारे आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को आसानी से समझ सके। तो अब इस सत्र की हम शुरुआत करने के लिए हमारे बीच हमारे अतिथिगण आ चुके हैं। अब हम कुछ ही देर में इस संपूर्ति सत्र, इस वैलिडिक्टरी सेशन की शुरुआत करेंगे। ये माक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गो सस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः सातमिन्नु सरदो अन्तिदेवा जतरा निश्चकरा जरसन्तानु वाचस्पते रतिगिरां सुतरां दवीयः प्रातः सदा सुमनसा मभिवन्दनीयः वन्द्यः समे मदनमोहनमालवीयः वन्द्यः समे मदनमोहन मालवीयः जयति विबुधवन्ध्या भारती भारतीया जयति विबुधवन्ध्यो जानकीशोवधेशः जयति जगति विश्वकाष्का विश्वनाथो जयति जयति हिंद। दिव्य हुआ पंडाल या दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस या हो गया जो आए आप श्रीमंत। सर, हम लोग आपका बहुत बहुत आदर और स्वागत करते हैं। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेद SVDV BHU। मैं निवेदन करूंगा
समन्वयक सर से कृपया सर का सम्मान करके अंगवस्त्र से माल्यार्पण करके सम्मान करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ऐसी महान विभूतियां हैं जिनका हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा। गांधी मूर्ति प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, नेशनल कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर रेवरेंड वादिंगला पन्नालोका जी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पाली। केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेदिक, कि सर कृपया आएं और अपना स्वागत भाषण दें और हमारे अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे स्वाहा विद्यां च यस्तद्वेदो भयंशः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संपूर्ति महोत्सव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वेद विषय के विश्व विद्वान गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्याय शास्त्र के राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि संस्कृत साहित्य के विश्व विद्वान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, साहित्य समालोचक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी गुरुजी, हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भारत सरकार का एक नया आयाम, जैसे वैदिक विज्ञान केंद्र को आप देख रहे हैं, इसी प्रकार वैदिक विज्ञान केंद्र के बाद भारत सरकार के द्वारा इसी का ही एक पुरस्कृत रूप कहिए या इसी का एक रूप IKS भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्थापित किया गया है। उसके राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी, हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि
जो श्रीलंका से पधारे हैं, डॉक्टर पन्नालोका जी, और हमारे सम्मुख लगभग 22 प्रांतों से आए प्रतिभागी गण, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, प्रोफेसर स्वाही सर पुरी से, हमारे बीच IAS अधिकारी जो साउथ से आए हैं, और लॉ कमीशन के संपूर्ण लॉ कमीशन, एक तरह से मैं कहूँगा, हमारे शंकरन जी, प्रोफेसर DP वर्मा सर जो लॉ कमीशन के माननीय सदस्य हैं, और लॉ कमीशन के अन्य भी पदाधिकारीगण, दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउथ से शताधिक प्रतिभागीगण इसमें उपस्थित हैं। सबका समवेत रूप से मैं इस संपूर्ति सत्र में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ बहुत से ऐसे विशिष्ट जन हैं जिनका नाम उल्लेख मैं सबको नामना परिचित नहीं हूँ, बहुत लोगों का नाम स्मरण है, लेकिन समयाभाव है। मैं समवेत रूप को सबको मैं प्रणतिपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस सत्र में विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अवस्थी जी का आगमन होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणवश वह नहीं आ पाए। मैं उनका भी इस मंच से अभिनंदन करता हूं। उनका संदेश का वाचन डॉक्टर शंकरन जी जो सदस्य हैं वो करेंगे। आप सबने देखा जब यह केंद्र की स्थापना हुई, इस स्थापना का जो मूल उद्देश्य मैंने उद्घाटन के क्रम में, विषय प्रवर्तन क्रम में मैंने बताया था कि यह जो विधि शास्त्र पर भी जब मैं यहाँ पर एक नया कोर्स डेवलप किया और जब अध्यापन के लिए मैं यहाँ के विधि के विशेषज्ञों से मिला, अनूप जी थे और लोग, तो हुआ कि इसमें कैसे क्रम बनेगा, कैसे इसका पठन का क्रम बनेगा। वैदिक जुरिस्प्रूडेंस का एक सीमित पक्ष हो सकता है, लेकिन क्या इस इतने व्यापक भाव में हम क्या कुछ स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन आज आपके सम्मुख कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज शताधिक रिसर्च स्कॉलर्स ने पैरेलल सेशन में अपने शोध पत्र का वाचन किया। मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी की इसी में सार्थकता है कि युवा पीढ़ी और विशेषकर लॉ के आधुनिक विधि शास्त्र के जो छात्रगण हैं, उन्होंने वैदिक जुरिस्प्रूडेंस के विभिन्न पक्ष 10 हमारे टेक्निकल सेशन हुए, जिसमें राजधर्म की चर्चा हुई, हमारी जो है न्याय शास्त्र, हमारा जो धर्म शास्त्र है, हमारा जो जितने भी वैदिक विज्ञान, वैदिक विधि के पक्ष हो सकते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से, उन सारे विषयों पर यहाँ पर टेक्निकल सेशन में पेपर पढ़े गए। तो और हमारे उद्घाटन सत्र में ही 2 ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो हमने पूर्व में 2019 में एक कार्यशाला की थी। उस कार्यशाला में जिन विद्वानों ने अपने पत्र वाचन किए थे, बाद में उनसे परामर्श लेकर के उन पेपरों को कंपाइल करके एक ग्रंथ का हम लोगों ने एक स्वरूप दिया। वैदिक आचार शास्त्र, इस ग्रंथ का भी 2 ग्रंथों का विमोचन उद्घाटन सत्र में किया गया। और आने वाले समय में जितने यहाँ पर पत्र पढ़े गए हैं, उनको एकत्रित करके उसमें जो सबसे जो उत्कृष्ट लेख होंगे, उनको पुनः एक पुस्तकाकार रूप में देने का प्रयास किया जाए। और मेरी ये संकल्पना है, मेरी क्या है, इस महामना की संकल्पना रही प्रतीचि और प्राची के क्रम में। हमारे यहाँ 3 कोर्स इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और वैदिक विधि शास्त्र। आने वाले समय में इसको PG कोर्स के रूप में भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और जिसको UGC के क्रम से भी
मान्यता प्राप्त हो और अन्य विश्वविद्यालयों में भी वैदिक विधि शास्त्र पर अध्ययन अध्यापन की परंपरा हो। देखिए, आप सबने यह महसूस किया वादे वादे जायते तत्वबोधा कि जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में वाद से तत्वबोध होता है, और यह आपने अनुभव किया कि जो हमारी वैदिक जो जीवन पद्धतियां रही, हमारी वैदिक जो जीवन, जो हमारे षोडश संस्कार और जो जीवन जीने की जो आर्ट रहा, वही एक संविधान के रूप में जो शास्त्र में था वो लोक में पहले स्थापित था, लेकिन कतिपय कारणों से हम उससे दूर होते जा रहे हैं। पुनः हम अपने मूल अवस्था को जाने के लिए ये सारे वाक जाल या ये जो तत्वबोध की स्थिति की ओर हम अग्रसर हैं, यह संगोष्ठी। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम सब उस जो भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, और हमारे में भारतीय चिंतन, हमसे किसी ने कहा कि वैदिक विज्ञान का क्या अभिप्राय है, आप एक शब्द में क्या कहेंगे? हमने कहा कि वैदिक विज्ञान मतलब आधुनिक विज्ञान का तात्पर्य है कि विकास की उस अंधी दौड़ जो बाद में वह किस रूप में रहेगा इसको कह पाना कठिन है, लेकिन वैदिक विज्ञान शाश्वत ज्ञान जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास रखता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस विकास की अवधारणा के साथ जो विज्ञान, जो पंच महाभूतों के साथ सम्मिलित जो विज्ञान की जो चिंतन दृष्टि रखता है, वही वैदिक विज्ञान है। हमारे बीच सम्मानित मंच में विशिष्ट विद्वान हैं और समय भी बहुत अतिकाल की ओर है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः जितने भी हमारे अध्येतागण यहाँ पर ये 2 दिन सारस्वत इस यज्ञ में, सारस्वत यज्ञ में, यज्ञ शब्द जो है देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ में आता है, तो संगतिकरण मतलब यहाँ पर विद्वानों का संगतिकरण, विद्वानों का जो एकत्रीकरण था, उससे जो नवनीत निकला है, ये भी एक सारस्वत यज्ञ है। तो इस सारस्वत यज्ञ में आए हुए सभी सुधीजन, सभी अध्येताओं का मैं पुनः हृदय से वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूं, और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आपका इसी प्रकार से हमें सहयोग मिलेगा, और इस यज्ञ में कुछ जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो। धन्यवाद सर। I hope this international conference has added few memory to your life. We would like to know as organizing committee, हम लगता है कि हम आप में से कुछ लोग में से ये जानना चाहेंगे। इसके लिए वॉलंटियर कुछ लोगों ने, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने नाम दिए हुए हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस शेयर के लिए डॉक्टर मधुश्री मंदार जोशी जी को। आप प्रिंसिपल हैं बालाजी कॉलेज पुणे में। मिस स्नेहा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वेलकम मैम। A very good evening to all of you. It's a great privilege that I've been given this opportunity to give a feedback on this conference. Just in the last session, I learned that in Dharma Shastra, all the incidents are explained through stories. So I'll also narrate a very small incident, a very tiny incident. In Takshashila, there was a tradition that whenever a student would come for the class, there would be a dwarpal or a gatekeeper. He would ask the students, what have you learned in the last class? It's only the student who could give the feedback, or the revision was allowed to enter the premises of the university. One fine day, one student asked the gatekeeper or the dwarpal, look, you listen to all our revisions every day. By this time, you must have gathered a lot of knowledge. You have so much
much knowledge, then how come you're still a Dwarpal and not a teacher in Takshila? The Dwarpal smiled and he said, what I have is knowledge. What the teachers in Takshila have is wisdom. What I have realized in this conference is all the distinguished speakers that we have had, the wonderful speakers, the wonderful presentations that I've heard, it all shows wisdom. This is the spirit of this conference. This is the spirit of India that I've seen here. Now the topic of the conference, if I come to, that's Vedic jurisprudence and its impact on contemporary world. It is of great importance, and let me admit this fact with all honesty, that I've studied in Delhi University, I'm a student of law, I teach law at Delhi University, but till this hour, I had very minute, minuscule knowledge about Vedic jurisprudence. But since I've come to this conference, I realized that when I teach in my class, I must include this as a part of the curriculum. So my take back from this conference would be, I cannot even describe it in words, but that would be that this knowledge, this Vedic knowledge, Vedic philosophy has to reach every household, and education is the best medium to do that. So all the students, all the teachers have to take it up, and I'm really congratulate to all the organizers. They've organized this conference really well on a very important topic. Thank you so much for doing it, and please keep on doing it in future as well. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, फॉर्मर वीसी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर कृपया आप हमें अपना आशीर्वचन दें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर वाडी नागल पय्यालोक, संस्कृत में हम प्रज्ञालोक कहते हैं, और पाली में जहाँ तक मैं समझता हूँ पय्यालोक होता है, और प्रज्ञा का आलोक उनका यहाँ पर विकीर्ण हुआ, बिखरा। मुझे बहुत प्रसन्नता है उनके दर्शन करके, मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति से मिलकर के, जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो उपक्रम है भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के प्रचार प्रसार का, उसमें वे संलग्न हैं। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी से भेंट हुई, उनके दर्शन हुए कई वर्षों बाद, और मैं बधाई देता हूं उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को। यह बहुत बड़ा उपक्रम यहाँ किया जा रहा है, और बहुत सुंदर जो पूरी समग्र दृष्टि है वैदिक विश्वबोध की, वैदिक तत्व मीमांसा की, उसको लेकर के यह वैदिक विज्ञान केंद्र यहाँ आरंभ किया गया, और आपने 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में यह यहाँ यज्ञ संपादित किया, तथा अन्य विषयों पर भी इस प्रकार के यहाँ विमर्श होते आ रहे हैं, हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जो वैदिक जीवन बोध, जीवन मूल्य, सृष्टि बोध है, उसके अनुरूप इसकी परिकल्पना की गई है कि इसमें 64 कलाओं पर भी विमर्श हो, इसमें चिकित्सा विज्ञान पर भी विमर्श हो, अन्य जो ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको समाहित किया जाए, और विधि कानून के विषय भी, धर्मशास्त्र भी। यह एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जिसकी आज चर्चा की जाती है, उसको यहाँ समाहित किया गया, और इसकी बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि जितने कानून बनाए गए हैं हम सभी अनुभव करते हैं कि वो औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज सरकार के समय बनाए गए हैं, और हमारे संविधान में भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटिश संविधान के आधार पर उनमें से अभी तक जो बनाई गई थी वो चली आ रही हैं। और अब आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय जीवन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करते हुए अपने सारे नियमों को, कानून की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करें। मेरा विषय यद्यपि भिन्न रहा है, लेकिन
हमारे यहाँ तो एकम शास्त्रम इतर शास्त्रानुबंधी, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। हम साहित्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जो धर्मशास्त्र है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है, जो न्याय व्यवस्था है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। मृच्छकटिक नाटक को आप अच्छी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें पूरा एक न्यायालय का दृश्य है, कैसे न्याय किया जाता था उस पर पूरा बहुत ही मार्मिक उसमें प्रकाश पड़ता है। और भी अनेक नाटक इस प्रकार के हैं। तो हम नाटक भी पढ़ाते हैं तो हमको कानून और न्यायालय की व्यवस्था कैसे हुआ करती थी प्राचीन काल में उस पर विचार करना पड़ता है। हम साहित्य शास्त्र पढ़ाते हैं तो वाद कैसे किया जाता है इस पर हमको विचार करना पड़ता है। तो मैंने एक कार्य किया था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वाद इन इंडिया इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, वो IIS शिमला के लिए किया गया था। वो किताब जब छपी तो उसमें कानून के जो विशेषज्ञ उनका ध्यान उसकी तरफ गया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र जो है उसके कुछ प्रोफेसर्स ने मुझसे संपर्क किया कि ये तो किताब आपकी बड़ी उपादेय है। वो किताब भारत के बाहर भी उस पर विचार किया गया और कई विषयों के लोगों ने उस किताब पर ध्यान दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना पाठ्यक्रम इस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि जो बहस की परंपराएं हैं हमारी उनका न्यायालयों में कैसे उपयोग हो सकता है। और न्याय दर्शन तो जैसा आचार्य उसके मूर्तिमान उज्जवल उदाहरण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, तो इतना गंभीर सूक्ष्म तलावगाही विवेचन न्याय दर्शन में कि कैसे किसी भी शास्त्रीय विषय पर ही नहीं जीवन में कैसे बहस की जाती है और वही बहस न्यायालयों में कैसे हो सकती है, उसकी इतनी सूक्ष्म मीमांसा हमारी शास्त्र परंपरा में वैदिक परंपरा में की गई है। 25 निग्रह स्थान हैं जिसको क्लिंचर्स या पकड़, प्रतिवादी जो रेस्पोंडेंट है वो अगर कहीं चूक करता है तो कैसे वादी उसको पकड़ता है, बहुत सूक्ष्म बारीक विवेचन उसमें होता है। जातियां हैं, असद उत्तरम जाति कहते हैं, रिप्लाई अगर गलत दिया गया तो उसको कैसे पहचानता है। तो ये कोटियां जो है उस पर तो मैं उस विश्वविद्यालय में 2-3 साल विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वहाँ पढ़ाता रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये हम नहीं जानते थे और ये तो बड़ा पूरा ऐसा एक फ्रेमवर्क हमको मिलता है कि हम बहस सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा उसमें कहना यह था कि संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा जिसमें बहस को लेकर के बहस की गई और किसी भाषा में डिबेट पर डिबेट नहीं हुआ कि बहस कैसे की जाए इस पर थ्योरी, उस पर कई किताबें लिखी गई कि वाद विनोद किताब है, वादन न्याय धर्म कीर्ति का है। ये शायद दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें कि वाद या बहस के बारे में बहुत बहस हुई, जबरदस्त बहस हुई है और कितनी कैटेगरीज वाद की बन सकती हैं उस पर बहस की गई है। तो ये हम कितने आर्गुमेंटेटिव थे ये तो बाद में हमने मान लिया कि हम तो बड़े भक्ति प्रवण हैं और कोई वाद विवाद में हम नहीं पड़ते, जबरदस्त वाद विवाद करने वाले हम लोग रहे हैं, सारी दुनिया से हम वाद विवाद कर सकते हैं। तो उससे हम आज क्या ले सकते हैं वो न्याय दर्शन हमको बताता है। दूसरा जो बहुत बड़ी परंपरा है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए वो जो उपब्राह्मण की परंपरा है। वैदिक मंत्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उनको आज के संदर्भ में समझने के लिए जो उनका उपब्राह्मण किया इतिहास और पुराणों ने किया, तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्म है ये इंटरप्रिटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ वेदा, व्याख्यात्मक विस्तार उसको वैदिक मंत्रों में जो ऋषियों का दर्शन है उसको व्याख्यात्मक विस्तार इतिहास पुराण देते हैं। तो उसको जब तक हम समाहित नहीं करेंगे और उसको आज के संदर्भ में आज के पर्सपेक्टिव में जब तक हम नहीं खोलेंगे तो हम आज कैसे पूरा जो वैदिक विश्वबोध है, जीवन मूल्य हैं और कानून के लिए जो हमारे ऋषि कह गए हैं उसको कैसे समझेंगे। तो उस पर भी बहुत विचार किया जा सकता है। मेरा सुझाव था कि उस पर भी आप विचार करें। एक कहानी मुझे याद आती, उसको बता करके मैं समाप्त करूंगा। मैं दूसरे काम से यहाँ आया था, अचानक 1 घंटे पहले आपने कहा कि आप आना है, आपको आना है। वो सामने बैठे उन्होंने भी कहा कि चलिए आप आइए। तो और मुझे अन्य प्रयोजन से जाना भी है, अन्य कार्य भी है, तो मैं बहुत क्षमा भी मांगूंगा आप लोगों से कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके यहाँ से चला जाऊँ, मुझे अनुमति भी दे दीजिएगा। तो महाभारत एक ऐसा अद्भुत विश्वकोश है भारतीय ज्ञान मीमांसा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो उसमें तो कुछ छूटा ही नहीं है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के सारे मूल्य न्याय व्यवस्थाएं जितने भी विषय हैं जीवन के, चाहे विज्ञान के हों, समाजशास्त्र के हों,
भारत में जो कुछ है वह सब महाभारत में है, ऐसा माना गया। महाभारत में यदि नहीं है तो भारतवर्ष में भी वह नहीं है, ऐसा हमारे ऋषि बताते आए हैं, हमारी परंपरा बताती आई है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक अणिमांडव्य ऋषि की कहानी आती है आदि पर्व में, और अद्भुत समस्या, ऐसी जटिल समस्या कानून और न्याय की उसमें आती है। और पूरी उस कहानी का पूरे हमारे कानून की परंपरा पर कैसा रिफ्लेक्शन होता है, पूरी व्यवस्थाएं बदलना पड़ती है। एक अणिमांडव्य को जो गलत सजा दे दी गई है, उसके कारण वो कहते हैं कि मैं धर्म को चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारी सारी कानून व्यवस्था को चुनौती देता हूँ। अणिमांडव्य महान तपस्वी थे, अद्भुत कहानी है। और कुछ चोर कुछ चुरा करके और पहुंच जाते हैं उनके आश्रम में, और उनका पीछा कर रहे हैं राजा के सिपाही। बहुत कविता में इतना सुंदर वर्णन महाभारत में किया गया है। तो वो लोग उसको कहते हैं जो चोरी का माल है, वो अपना गठरियाँ बांधे हुए हैं गहने वगैरह, और वो जाकर के छिप जाते हैं और राजा के सिपाही ढूंढते हुए आते हैं। अणिमांडव्य मौन व्रत लेकर के तपस्या कर रहे हैं, महान तपस्वी हैं। वो उनसे पूछते हैं कि महाराज कोई चोर यहाँ भागते हुए गए, कहाँ है? वो मौन व्रत में है तो जवाब नहीं देते, और वो आसपास ढूंढते हैं तो उन्हीं की झोपड़ी के पीछे, कुटिया के पीछे वो चोर मिल जाते हैं। तो चोरों को पकड़ लेते हैं, और वो सिपाही कहते हैं कि ये जो ऋषि है ये बोला नहीं, इसकी जरूर मिली भगत है, इसको भी पकड़ के ले चलो। अब वो मूर्ख होते हैं, जैसा कि होते ही हैं, उसमें क्या बात है। सिपाही पुलिस ये सब पकड़ ले गए वो राजा के पास। वो कहा कि साहब ये चोरी का माल तो ये प्राप्त हुआ, ये चोर इनके आश्रम में छिपे हुए थे, और इनसे महाराज जी से हम पूछ रहे थे कि बता दीजिए, पीछे है, इनको मालूम है, ये बता नहीं रहे हैं। तो राजा ने पूछा उनसे, अणिमांडव्य से, कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो तपस्या कर रहे हैं। वो मौन थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। राजा भी मूर्ख ही था, जैसा कि हो सकता है। उसने फांसी की सजा दे दी सबको, चोरों को भी दी, और कहा इनको भी फांसी पे चढ़ा दो। बड़ी कठोर सजा दी गई। हालांकि धर्मशास्त्र में ऐसा विधान नहीं है कि चोरी के लिए, लेकिन वो कोई काल ऐसा रहा होगा कि इसमें इतनी कठोर सजा दी जाए, तो उसने सजा दे दी गई। चोरों को तो सजा मिल गई। अणिमांडव्य को जब वो सजा, वो ये भी एक विषय है आप लोगों के लिए कि प्राणदंड के लिए, डेथ सेंटेंस के लिए कितने तरीके होते थे, क्योंकि कोई बंदूक तो थी नहीं, और हैंग टिल डेथ जो रस्सी फंदा बांध करके लटकाया जाता था वो भी कम होता था। एक शूलारोपण का तरीका होता था कि भाला उसके गले में भोंक दिया जाता था, और आर पार हो जाता था तो उसका प्राणांत हो जाता था। तो वो शूल उनके उसमें भोंक दिया गया, और वो ऋषि इतने महान ऋषि थे, उनका प्राणांत नहीं हुआ, वो चला गया, और वो अपने साधना में वैसे के वैसे ही हैं। कष्ट उनको हो रहा है, शरीर को हो रहा है। अब बाकी लोगों को जो शूलारोपण किया गया उनका प्राणांत हो गया, उनको उतार करके ले गए, उनके सब संस्कार हो गए, और बाकी वो जो सजा देने वाले थे उन्होंने देखा कि ये तो जिंदा है, ये मरे ही नहीं है, आर पार हो गया इनके भाला। तो उन्होंने राजा को बताया कि वो जिन ऋषि को आपने सजा दी थी, हमने तो आर पार कर दिया भोंक करके भाला उनके। ये मैं अपनी भाषा में सरल ढंग से बता रहा हूँ। मेरा एक बड़ा लंबा लेक्चर इस पर है, जिसमें सारे रेफरेंसेस के साथ में मैंने उदाहरण देते हुए ये पूरी कथा और उसके क्या इम्प्लीकेशन है वो बताई है। तो यहाँ समय भी नहीं है दुर्भाग्य से। तो राजा भी बड़ा चकराया, उसने कहा चल करके देखते हैं। तो गए और उन्होंने देखा कि इनकी नाड़ी चल रही है और ये मग्न है तपस्या में। तो उनका उतारो भाई, ये तो कुछ लग रहा है गलती हो गई। और उसने माफ़ी मांगी कि महाराज हमसे गलती हुई और अब इसको निकाला जाए। तो भाला जो खींचने लगे तो टूट गया और उसकी नोक उनके जो आर पार हो गई थी वो फंसी रह गई। तब से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। जो नोक होती है शूल की, अगला हिस्सा, उसको अणि कहते हैं। तो अणिमांडव्य के नाम से वो विख्यात हुए। राजा उनसे बहुत क्षमा मांगते रहे, फिर भी नहीं बोले। उन्होंने कहा अब आपको मैं छोड़ देता हूँ आश्रम में। आश्रम में आ गए, फिर से वो तपस्या करते रहे। उसका कष्ट उनको कभी कभी होता था। तो अब एक बार वो अपनी तपस्या के बल पर धर्म के सामने चले गए, मतलब कानून का जो डाइटी है, कानून का जो देवता है धर्म, उसके सामने चले गए। और उन्होंने कहा कि वो तो मैंने भोग लिया, क्योंकि लोग मूर्ख थे, सिपाही मूर्ख थे, राजा से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई शाप नहीं दिया। लेकिन आपका काम है कि दुनिया में न्याय व्यवस्था बनी रहे। ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों कष्ट झेलना पड़ा, ये मुझे तकलीफ हो रही है इसकी। और मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैंने उनको नहीं छिपाया था चोरों को। तो धर्मराज ने उनसे कहा सब देख दाख करके कि आपने एक चिड़िया के पंख में इशिका घुसा दी थी। इशिका कहते हैं वो सींग की नोक। वो चिड़िया मर गई उससे।
तो उसकी सज़ा आपको मिली है। तो अणिमांडव्य ने पूछा कि मुझे तो याद ही नहीं कि कभी मैंने ऐसा किया था। कब मैंने किया था? उन्होंने कहा जब आप 7-8 साल के बच्चे थे तब आपने किया था। उन्होंने कहा आपने गलत किया है। अबोध बच्चा जो होता है वो नहीं समझता है कि चिड़िया मर जाएगी, उसको पता नहीं है, और मैंने अपराध किया था तो इसकी सज़ा इस तरह से मृत्युदंड नहीं दी जा सकती, आपने गलत किया है। तो उन्होंने कहा कि जितने कानून बने हैं उनमें विधान ही नहीं है, यदि बच्चा करता है अपराध तो उसको इसकी सज़ा ये नहीं मिलेगी, ऐसा कोई बनाए नहीं, आप ही लोगों ने तो कानून बनाए हैं। तो उन्होंने कहा आज से मैं व्यवस्था बदलता हूँ कि इसकी जो एज होगी ये होगी। उसके मैंने फिर उदाहरण दिए हैं। नारद स्मृति में नारद स्मृति में प्रावधान किया गया कि 14 साल की उम्र से कम है तो सजा नहीं दी जा सकती उसको। कुछ स्मृतियों में मिलता है कि 8 साल जो उन्होंने कहा उससे कम यदि है तो सजा नहीं दी जा सकती। ये सारी व्यवस्थाएं आई और वो धर्मराज को उन्होंने शाप दिया, आप देवता हैं, वो लोग आदमी तो गलती कर सकता है, आपने क्यों नहीं उस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, इसलिए आप अधपतित होंगे मृत्यु लोक में। कथा तो बताई गई है कि धर्म ने अवतार लिया विदुर के रूप में। विदुर जो बोलते हैं आप देखिए कि कितने बड़े कानूनविद के रूप में बोल रहे हैं। द्रौपदी को घसीट करके लाया, उसको अपमानित कर रहे हैं, केवल विदुर हैं जो बताते हैं कि सारा गैर कानूनी है तुम्हारा। द्रौपदी खुद सवाल उठाती है, इस पर मैंने न्याय की दृष्टि से बड़ी लंबी मीमांसा की है। द्रौपदी ये पूछती है कि मुझे जो जुए में दाव पर लगाया गया वो लीगली वैलिड नहीं है, आप लोग बताइए, भीष्म द्रोण ये सब बताएं, हाउ फार इट वाज लीगली वैलिड टू पुट मी ऑन स्टेक। यही सवाल एक औरत का उस सभा में है कि जो आदमी दास हो गया है उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। पत्नी अगर प्रॉपर्टी है उसको जुए में दाव पर लगाना भी लीगल है, लेकिन वो तो दास खुद स्लेव हो चुका है, स्लेव को प्रॉपर्टी राइट नहीं होते। तो युधिष्ठिर ने जो मुझे दाव पर लगाया वो इलीगल हो गया, इसलिए मैं दासी नहीं हुई। यही सवाल वो कर रही थी। विदुर ने कहा बिल्कुल सही कह रही है। अकेले विदुर और एक युत्सु विकर्ण जो 100वां भाई था कौरवों में, 2 लोग चिल्ला करके कहते रहे कि गलत हो रहा है, द्रौपदी सही कह रही है, उसका लीगली वैलिड सवाल है। तो विदुर बोलते हैं क्योंकि वो धर्मराज के अवतार हैं। तो ये कहानी तो वहाँ इसलिए सुनाई गई कि विदुर जो न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं पूरे महाभारत में, वो धर्म के अवतार हैं, तो धर्म का अवतार क्यों लेना पड़ा। तो जो कानून व्यवस्था का जो देवता है वो भी चूक करता है। तो अणिमांडव्य ने तो खैर व्यवस्था दी कि मैं व्यवस्था देता हूं कि किसी बच्चे को इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद से स्मृतियों में आप अगर स्मृतियां मिलाएं तो आप देखेंगे कि जो प्राचीन स्मृतियां हैं उनमें बच्चों के लिए सजा की व्यवस्थाएं का अलग से कोई प्रावधान ही नहीं है। कम से कम ये कहना चाहिए कि यदि बच्चा हो तो उसको नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद की स्मृतियों में फिर ये राइडर्स आते हैं कि बच्चों को सजा नहीं दी जाएगी। तो ये केवल एक अकेली कथा इस तरह की नहीं है। आपके तो न्यायालयों में तो इंस्टेंस प्रेसिडेंसेस ये सब बताए जाते हैं, और पुराणों की इतिहास की पद्धति यह है कि जीवन की सारी जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, उसको किस्से कहानियाँ जो हैं वो चले आ रहे हैं समाज में, उनके माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। तो महाभारत में कई कथाएं इस तरह की हैं। इसकी उल्टी कथा भी है कि वो कौशिक ब्राह्मण जो है वो सच बता देता है कि उधर से गए हैं, चोर डकैत पीछा करते हुए आते हैं और कुछ सज्जन लोग भाग रहे हैं, और डकैत उनसे पूछते हैं कि किधर गए बताओ, तो वो सत्यवादी हैं, वो सत्यवादी की कथा है। तो सत्यवादी जी महाराज बता देते हैं कि उस तरफ गए, उस तरफ जाकर उनको लूट लेते हैं। तो सत्यवादी जी महाराज नरक में जाते हैं, नरक में जाकर के पूछते हैं मुझे नरक क्यों मिला, तो हमें जिंदगी भर मैंने सत्य बोला। उन्होंने कहा कि तुमने सत्य बोला बहुत मूर्खता की, संत महात्माओं को मरवाने के लिए तुमने सत्य बोल दिया वहाँ, क्यों नहीं चुप रह लेते उस समय थोड़ा। डकैत पूछ रहे हैं, मालूम है कि लोग डकैत थे, मार डालेंगे, तुम अपने व्रत का पालन कर रहे, तुम परम मूर्ख थे। ये भी एक शिक्षा है कि किसी निरपराधी को बचाना हो तो दबा ले सत्य को। वो तो जो पूछ रहा है वो तो डकैत है, वो कौन सा न्यायविद है, कानूनविद है। ये भी महाभारत बहुत सारी कथाएं जो पूरी विजडम है हमारी, ये उसमें रिफ्लेक्ट होती है उन कथाओं में। और कानून की व्यवस्थाएं उससे कैसे बदलती हैं, तो वो सारे उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूँ कि कैसे। ये पूरा एक चैप्टर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर है कि अणिमांडव्य की कहानी जो महाभारत में है उससे हमने कानून कैसे बदला, वो उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बताते हैं कि जो अदंड को दंड देने वाला है राजा, उसको सजा कैसे मिलेगी, उस राजा ने जो मूर्खता की उस पर विचार होना चाहिए। जिन सिपाहियों ने उस ऋषि को पकड़ लिया था उनको सजा क्या दी जानी चाहिए, ये सब विचार करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में।
और फिर कहते हैं कि ये मैंने प्रावधान किए हैं मणिमांडव्य की जो कहानी चली आ रही है उससे शिक्षा लेकर के। तो बड़ी परंपरा है हमारी, 3000 साल 4000 5000 साल की विस्डम है, कितना हमारे ऋषि बता करके गए हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि सभी कुछ ले लिया जाए, और हम भी कुछ हैं, हमें भी कुछ विवेक है, होना चाहिए। उसको स्वीकार करते हुए हम उसमें से ग्रहण करते हैं जो आज के समय के लिए है। जैसा कि हमने पश्चिम से जो व्यवस्थाएं ले ली हैं वो सारी की सारी अच्छी नहीं हैं। धर्मशास्त्रों में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी हो सकता है कि आज नहीं, उपादेय प्रासंगिक रह गई हो, लेकिन बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए हमारी आंखें खोल देने वाला है, हमारे लिए ग्राह्य हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये केंद्र इसी तरह सार्थक चर्चाएं करता रहेगा, और पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं बहुत देर तक यहाँ नहीं उपस्थित रह पा रहा हूँ। आपके कार्यक्रम के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। सर, आपके आगमन और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Now I request to Dr. Anil Kumar Maurya, Joint Secretary of this conference and Assistant Professor Faculty of Law, for presenting the report of the conference. A very good evening to all the dignitaries sitting on the dais, off the dais, and the participants. It is indeed a matter of great privilege and honor for me to speak to you and present the conference report. As you are well aware that the 2 days international conference, it is started on 11th of February and is concluding today. You all would also agree that we had a very tight schedule throughout the conference, and in this conference a total number of more than 300 participants, they have participated from across India, representing almost 22 states. It is also worth mentioning that we have several participations from international delegates as well. We have representatives from United States of America. We also have in our panel from Sri Lanka, and we also have few participants from other countries including Nepal. The conference started with the inaugural session, and within the inaugural session, a welcome address was given by Dr. Upendra Kumar Tripathi, who is the coordinator of the Center for Vedic Sciences. Keynote address of the inaugural session was given by guest of honor Sadguru Shri Madhav Priyadarshi Ji Swamiji. Swamiji has emphasized that laws made today, they are only right oriented, and there is an immense need to frame laws taking inspiration from Vedas and other texts, which also incorporates duties of human beings. He also said, we don't worship Deh, but we worship Dev residing inside Deh. He has further elaborated the concept of dharma and said that dharma is a far larger term to comprehend, and it should keep flowing, else it will become stagnant and a matter of exhibition in the museum. Distinguished scholar and the guest of session in the inaugural session, Dr. Swati Bhattacharya, emphasized upon looking at spirituality to solve the human problems. While differentiating spirituality from religion, she said, spirituality is metaphysical, something within, whereas religion is human attempt to grasp the metaphysical idea. She said that putting in the perspective of Vedic jurisprudence in United States and other countries at par with the Jews and Christian jurisprudence will certainly contribute in developing a more accommodative world order. She brought forward the idea of cultural humility and its significance in the modern world. She emphasized that as healthcare professional, one should understand the importance of religious beliefs also. A special guest of the session, Professor Shanti Sri Dulapudi Pandit, who is also
the Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University. She had spoken about decolonization of Indian mind. She highlighted the need to be proud of Indic civilization. She said that Indic civilization is too tall despite Greek and other older civilizations they have decimated with the passage of time. Its continuity with a blend of myth and reality, modernity and traditionalism, integrity with innovation and inclusion are some of the attributes of accommodative features of Vedic jurisprudence. She also mentioned that dharma is not to be equated with religion. Chief guest of the inaugural session, Honorable Dr. Justice B.S. Chauhan, has deliberated on the Veda's influence on justice system in India. He has highlighted the concept of Nyaya in Indian text, and while exploring the Western concept of right emanating from Magna Carta, he said that our Vedas already included such rights. He has cited the examples of Shukraniti, Mahabharata, Manu Smriti, Rig Vedas, and several other texts to explain the idea of justice and the ideal character of a judge. He has also highlighted different facets of law existed in Vedic jurisprudence, and the presidential address of the inaugural session was given by our rector, Professor V.K. Shukla. Dignitaries sitting on the dais in the inaugural session have also released 2 books and the souvenir of the conference. The conference was totally divided in 11 different technical sessions, which was based on different themes of law. Session 1 to 6 was happened on the day 1, and rest of the sessions they have been organized on day 2, which is today. Technical session 1 was had the address by several distinguished scholars in the field of law and other disciplines. Professor Hidey Ranjan Sharma chaired the session, and Professor Pushp Kumar Lakshman from Faculty of Law, Delhi University, who is also sitting here, he has moderated the session. Honorable Mr. Justice S.N. Pathak had spoken on the interface of Vedic Nyaya, Shastra, with the Western concept of justice, and said that dharma is a unique blend of rigidity and flexibility, and we are following ancient Vedic traditions without even being aware of it. Honorable Mr. Justice K.T. Shankaran, who is the member of Law Commission of India and is also present here, he had spoken about the perspectives of Vedas and Puranas in reference to the environment, and highlighted that Vedas were the first text in the library of mankind. Professor Narendranath Pandey has also talked about the relevancy of Raj Dharma in the contemporary times. Technical session 2 was based on the topic of dialogue on Nyaya Shastra in Vedic tradition and Western idea of justice. The session was chaired by Padma Bhushan Professor Vasishtha Tripathi and moderated by Professor Ram Sagar Misra. Distinguished speaker of the session included Professor P.K. Mukhopadhyay, Professor D.P. Verma, who is also present here, Professor Rajaram Shukla, Professor Srinivas Varakhedi, Sri Ravi Kumarji, and Jitendra B. Shah. Technical session 3 was based on different dimensions of tradition and law, which was chaired by Professor Ramurthy Chaturvedi and Professor Dr. Vinod Kumar of NLU Delhi. Technical session 4 was titled as Criminal Law Perspectives from Principles to Practice. The session was chaired and moderated by Dr. M. Rajendran. Sir is also sitting here on the first bench. Distinguished speakers of the session included learned Professor Brij Kishore Swain sir, Dr. Sunil Sondhi, among others. Technical session 5 was based on different dimensions of tradition and law, and which was chaired and moderated by Dr. Sirish Kumar Tiwari. Technical session 6, which started on day 2 of the conference, was based on constitution, Raj Dharma, and good governance. Professor V.K. Shukla is also sitting here, has chaired the session, and Professor V.S. Misra moderated the session. Distinguished speaker of the session included Dr. Reverend Wadinagala Pannaloka from Sri Lanka, Dr. M. Rajendran, Professor Amarpal Singh, Professor Pushp Kumar Lakshman, and others. Technical session 7 was based on different dimensions of the Vedic tradition of law, which was chaired by Professor Abha Trivedi and moderated by Professor Vibha Tripathi from Faculty of Law, Banaras University. Technical session 8 was related to dialogue between Dharma Shastra and modern times, which was chaired and moderated by Professor Brij Kishore Swain. Distinguished speaker in the session included
Acharya Ganeshwar Shastri Dravid, Professor Ramnath Jha, Advocate I. Urulappan, Professor Hari Ram Mishra, Professor Shankar Kumar Mishra, and Dr. Vivek Pathak of Faculty of Law BHU, and Dr. Madhav Janardhan Ratate. Technical session 9 of the conference was based on different dimensions of Vedic tradition of law, which was chaired by Advocate Professor Dr. Firdaus Shroff and moderated by Dr. Chandan Upadhyay. Session 10 was related to family law perspectives from principles to practice, which was chaired and moderated by Professor Jata Shankar Tiwari. Technical session 11, which was the last session, was based on commercial law perspective from principles to practice, which was chaired and moderated by Dr. Abhijit Dikshit. The conference is going to be concluded after the address by the guest sitting on the dais. As the joint organizing secretary of this conference, I firmly believe that the conference has achieved its purpose. The core purpose to organize this conference was to bring before the world the richness of our ancient systems and texts, which has largely been ignored systematically in academic circles. I am sure that all deliberations which has taken place must have ignited the minds of the scholars participating in the conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Anil. Now, it is indeed our pleasure to have among us Dr. Reverend Wadinagala Pannaloka ji as guest of honor of this session. I now request to sir kindly bless us. Distinguished professors, scholars, students and participants, and also Dr. Anil, Kumar and the organizing committee members. It's a great opportunity to join this conference. Especially, I should express my gratitude to the organizers for inviting me to come from Sri Lanka. Even though I am not expert in either in jurisprudence or in Vedic studies, but I think that inclusivity of Indian culture might have compelled them, consciously or unconsciously, to include me as part of this conference. So that's a great thing. I always love to Indian culture because of this inclusivity. Once Dalai Lama said, we all know, India is a place where all the rishis are worshipped. In ancient time, we learned that there were Brahmins, the Sramanas, and among the Sramanas, some were materialists who denied ethical teachings, but in front of the eyes of the people, they all were rishis and they all were supported. I think that great tradition of humanity still continues in this land. And also, another blessing is to visit the Kashi. Kashi is a great thing for even for an Indian. So perhaps maybe some Indians still have not visited here, but I could. For the second time, this is my second time. So, and also I would congratulate for the organizers for organizing this invaluable conference. I wish them future success. Throughout this conference, what I noted is there was an attempt to combine the ancient wisdom and spirituality with modern jurisprudence. Why we are trying to do is, we all experience, it is, I think, nature of any human civilization. We can't stay with same teachings or ideologies or practices forever. They are challenged by time to time. So then we are pressed to seek for new solutions. We have to rely on innovations. For that, we can, sometimes the easiest way is to look at what we have. So because of, we all experience that legal system which prevails today is challenged in many ways. Some people, maybe justice is not delivered all the time. Justice is denied. So I think naturally any human production
as some says, suffers due to some incompleteness. So it is common, I think, jurisprudence or legal systems is not an exempt. So we have to, this Vedic Vigyan Kendra, I think, has selected the best option to find some solutions which are for the questions or the issues may be burning in the world. So actually, this discovery is not limited to India, but if we discover something valuable today from our ancient tradition, it will be beneficial for the entire humanity. So this, I pursue this effort is kind of universally valuable effort, and it can help each and every human beings on our earth. So I think we have to appreciate, being a Buddhist monk or a religious person, to see this sort of actions, in my terms, this kind of altruistic activity, which has no conditions. It is unconditional care for humanity. That is what I think from Vedic time to this day, this land of spirituality of India has been doing. And in this conference, I noted some insights, especially the scholars came from all the branches of knowledge. And this is, I have to appreciate another point. This is it was an interdisciplinary approach to the subject. Sometimes, of course, how a monk can be invited to discuss legal system, because I see legal or the law faculties. In law faculties, okay, rarely there are monks, students to get degrees there, but normally they are not welcome. But here, it's wonderful. Yesterday, Sadhguru, I should mention his name, Sadhguru Sri Madhav Priyadarshi Ji Swamiji. He was very pleasant to me also. He also was present. So this is a kind of effort that we learn from every agents or the parties involved in the society. Law is inclusive of everyone. No one is exempted. So all have to contribute to produce a better system of law. So I think the organizers have understood this need and the importance of inviting all the experts representing their various fields and join here to discuss and find some insights to develop or to improve our existing legal system. In one sense, it reminds me that today morning also I just quoted, at the time of the Buddha, under the Ganatantra system, republics or we call democracies, one rule or one principle the Lichavi kings followed was they were numbered, I think 7,000 leaders come together, get together and discuss together and disperse in harmony. I think this kind of practices reminds me that kind of essence of democracy, democratic practices, I think, which are essential for the advancement of human society. And here, to refer to the subject areas, actually I can't mention all because I'm not familiar with all these. Starting from the Veda, the scholars discuss about the teachings related to law in the Nyaya Mimamsa, Tamil literature, Buddhism, Western legal philosophy, and etc. etc. So many areas of the subjects were touched here and tried to find some insights for us. And finally, another interesting observation or a
presentation I saw in Professor Pushpa Kumar Lakshmananji, I was really impressed with. One thing is, he came to the point. Of course, we learn from the Veda, Nyaya, and every tradition, the values, dharma. But how we are going to implement it? How we are going to make it day-to-day, part of our day-to-day life, in our practice. So for that, Professor came up with the suggestion that we should include these values in the Constitution. So he got an example from the Constitution of Bhutan, in which it is mentioned that it begins with the blessings of triple gem. It starts from, it means, because it is a Buddhist country, so they have at the beginning and in the preamble included their identity and the values they appreciate and they follow. So same thing he suggested to include into the Indian Constitution. So I think this is the most important thing. We have to find a mechanism, we learn values, we discuss, but how we are going to implement it, adopt into our life. For that also there should be a mechanism. Today's best mechanism is legalize it through the Constitution. I'm thankful to Professor. And finally, I think I should not take much time because there are so many precious gems in the stage to present ideas than I. So I should not waste this precious time. Finally, one Professor Vivek Kumar Pata, he said the most important right is right to happiness. I think here is the place where the Buddha plays the role. The Buddha's attempt was to find happiness, which is not subject to change, eternal happiness. Nibbana, we all appreciate, we all want to attain, I hope you do, moksha. So, Nibbana is defined as Nibbanam Paraman Sukham. Nibbana is the highest happiness. So, entire Buddhist teaching, entire Buddhist program or project, I can say, aimed at gaining happiness for people. It is maybe secular, maybe transcendental. For both realms, we need, the most important thing is we are oriented at getting happiness. But in the world, not only the Buddha, there are many philosophers who have discussed this, but some philosophers got stuck in some places, like utilitarianism in the West. They formed the theory, but they couldn't distinguish between right and the good. They thought if good can be materialized in any kind of means, even using the unethical means, it is justified. But in India, in Buddhist tradition, in Vedic tradition, right and the good cannot be separated. The right leads to good. So this, our attempt, I think, is an ethical attempt we can consider, and also our entire thinking should be based on this ancient wisdom that prevailed in this land and prevailing forever. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Very good evening to all of you. This is a galaxy of distinguished scholars, and I'm very eager to listen to Adarani Padma Bhushan Vasishtha Tripathi ji, because I'm not a Nyaya person. I'm coming from hardcore engineering and technology side of things. So, but then the kind of discussions that we had just a few minutes ago, it was so illuminating that I would like to not extend too much, and then I will come directly to the point. In fact, that is what he was saying, we were talking about too. And as Sri Harsha says in his Nashidriya Harshajatam, Mitam Chisaram Vachohi Vagmita. So I'll just finish up in few things and I'll come directly to the point. I represent here the Indian Knowledge Systems Division of the Ministry of Education. And the mission of this division, if I have to say in one sentence,
is to bring the Indian knowledge systems which are currently in libraries to laboratories. That means we need to rejuvenate the traditions of Indian knowledge systems, and that implies to all fields of Indian knowledge systems that we have, our ancestors have explored, and to bring them into the contemporary world so that we can solve the contemporary problems using the contemporary knowledge systems, a blend of the Indian knowledge systems and the contemporary knowledge systems, to solve not just today's problems but also the emerging issues both in the society, social, technological and all domains. So that is essentially the mission of Indian Knowledge Systems Division, and we do many things, and I see a lot of young students here, and I also see young colleagues here from different universities. So I will talk about just three programs that we do. The first one is, there is a internship program that we do. This is especially for the students. There is a 2-month paid internship that we sponsor, where if you are picked by any of these talks and you want to explore more, we provide an opportunity to work with a mentor and do an internship for about 2 months during the summer vacation. The call for that will come out in April or so. So far we have trained about 1,600 students in the last 1 year. So there is an opportunity there, and you'll get a certificate of internship as well from the Ministry of Education and IKS Division. And the second thing for my young colleagues here, who are individual faculty members, there is currently a call for research for proposals which we are currently going on. And there are 9 topics. The most relevant of that for you all here is coming up with new universal models, sociological models from an emic perspective. So essentially most of the law, I mean, we have been discussing here, and then I was looking at the proceedings. The idea is that Indian law and all these things are essentially based on the outsider perspective, and we need if we want to do the Purvapaksha, and if we want to understand and come up with our own perspective, we need to develop a Bharatiya Drishti and put the jurisprudence from a Bharatiya Drishtikona. And essentially we are looking for these kind of models which you can make. How can you bring this Vedic jurisprudence, for example, into the contemporary world, and then what kind of models can we come up with? These are the things that we are looking at essentially in that area. So please do apply. The last date for that is 25th of February, and you can go to iksindia.org, where iksindia.org, and you'll find all the description of all the programs and all of those things. There are 8 other areas, but I will let you go and take a look at those things in those things. And having said that, it is a great pleasure that this kind of conference is happening in Banaras Hindu University, because it basically reflects the vision of Mahamana. And also I congratulate Upendra Tripathi ji for organizing this conference and bringing together essentially the student and faculty from entire country. And the third program that I was going to talk about is essentially, the first one was the internships, second one are the research proposals, third one are we do a lot of faculty development programs, and one of the things that we are very, very interested in is the essentially developing courses and development of faculty in the basically with the perspective of Bharatiya jurisprudence, Vedic jurisprudence. So this is something that we'll be looking forward to work with you all. And there are many more initiatives, but again, as I said, I want to listen to more people there, because that is Sajjana Sangatyam is Durlabha. Therefore, I will stop here. And if you have any questions, we can reach out to us. And our website is iksindia.org. Thank you so much, and namaste. थैंक यू सर. वी आर के सत्र में हमारे बीच मौजूद रहना था ऑनरेबल जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को, पर स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आए, लेकिन उनका संदेश हमें प्राप्त हो चुका है, जिसको पढ़ने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जस्टिस के.टी. शंकरन जी. सर से निवेदन है कि कृपया आएँ और सर का संदेश हमें दें. Distinguished persons on the dais, and dear friends. At the outset, please accept my sincere apologies for being unable to be physically present here amongst you on account of being indisposed due to sudden illness. I indeed consider it an immense honor and privilege to have been invited to deliver a valedictory speech on this felicitous occasion. I pay my earnest homage to the great visionary Mahamana Pandit Madan Mohan Malavaji for conceiving and bringing into existence this marvelous institution of learning and educational excellence with an illustrious history and legacy that now dates back to more than a century. I also extend my heartfelt congratulations to the Center for Vedic Sciences for organizing
this international conference on Vedic jurisprudence, a subject whose significance is all the more germane, especially in the current times. Having lost most of the touch with our magnificent ancient traditions, culture and majestic heritage, we Indians in the present age tend to value it only when a portion of it is validated and appreciated by the West. Most lamentably, such has been the destructive effect of incessant waves of invasions and colonization that we have suffered over many centuries. What, however, needs to be realized is that no amount of merciless loot and plunder and monstrous barbarities have ever succeeded in wiping off our existence and to our splendid culture's will and resilience to sustain and thrive. To quote a famous couplet by Iqbal, कुछ बात है ही हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Ladies and gentlemen, over the course of past 2 days, you have had the privilege of listening to an array of distinguished juristic personalities, professors and scholars of stellar intellect. Numerous multifaceted aspects of Vedic and Dharmashastric jurisprudence have been covered in these succinct, sagacious and much fruitful discussions. I am most certain that these discerning deliberations have been greatly beneficial to all of us. I find myself in a very precarious situation today, being the last speaker at an event when much of what had been said has already been said. Once one comes up only to facilitate the so-called graveyard shift. Nevertheless, even if at the cost of being repetitive, I shall attempt to throw some light on our ancient and much treasured concept of dharma and its manifestation in our constitution and other laws, both domestic and international. The great sapient sages of ancient India identified fourfold goals of human life. These objectives provided us with a benchmark to live our lives, trying to make it disciplined and righteous, known as the four Purusharthas. These objectives were dharma, that is ideals, duties and obligations; artha, the material well-being; kama, material pleasure; and moksha, liberation of the soul. To quote our second president and illustrious philosopher, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, quote, "If life is one, then there is one master science of life which recognizes the four supreme ends of dharma or righteousness, artha or wealth, kama or artistic and cultural life, and moksha or spiritual freedom." The Hindu code of practice links up the realm of desires with the perspective of the eternal. It binds together the kingdom of earth and heaven. Unquote. Dharma has been defined as the highest ideal of human life. It is a Sanskrit noun derived from the root dhri. Although it is nearly impossible to give an all-encompassing definition of dharma, but its most appropriate definition to me seems to be ya dharatye sa dharmaha, that which upholds, sustains is dharma. Dharma is the cornerstone on which the ideal way of Hindu life is based. Any word in another language is incapable of describing the full import of the Sanskrit word dharma. Dharma has variously been described by different people as duty, righteousness, or the performance of virtues. All creation, animate and inanimate, has each its own individual dharma to practice. It is the God-given law of one's own being, and no derogation from dharma is permissible without serious consequences to the transgressor. The great German Indologist Max Muller defines dharma as an Indian version of natural law, since the ancient Indians used dharmic principles to regulate their way of life. It was only much later the term dharma began to be associated with religion. Dharma in Sanskrit language encapsulates the legal language of natural law or morality more prominently and broadly in terms of perceptibility than found in religion, which has a much narrower conception and interpretation. Hence, dharma need not necessarily be considered as religion only. Its scope and ambit is much beyond that.
The concept of dharma is primarily associated with its nearest literal meaning in English language, that is righteousness. It means righteousness of a man's actions. It incorporates ethicality and morality, thus enabling and upgrading human existence. Such is the colossal importance of the dharma that even the supreme Nirakar Nirgun Brahm, formless and attributeless Supreme Lord, takes the human form and incarnates on earth only to uphold dharma. Lord Krishna proclaims in Srimad Bhagavad Gita as follows: Yada hida hi dharmasya glanir bhavati bharata apyuthana dharmasya tadatmanam sujamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samstra sabsapanarthaya sambhavami yuge. Whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth to protect the righteous, to annihilate the wicked, and re-establish the principles of dharma. I appear on this earth age after age. The same promise is made in Goswami Tulsidas Ji Maharaj's magnum opus Srimad Ramacharita Manas as well. Jab jab hoi dharma ke hani, बाढ़ ही असुर अथम अभिमानी करम ही अनीति जाय नहीम धरनी सीदहीम विप्र भेदेनु सुर धरणी तप तप प्रभुतारी विविध शरीरा हिरही हरही कृमानिधि सज्जन पीरा. Rama is called Maryada Purushottam only because his conduct and actions were always perfectly in accordance with dharma. This is so aptly described in this verse from Valmiki Ramayana. Ramo vigrahavan dharma sadhu satya parakrama rajad sarvasya logasya devanam iv vasava. Meaning Rama is the personification of dharma, that is Rama is dharma and dharma is Rama. So in a way, when we extend our devotion to Rama in the form of Supreme Personality of Godhead, we are in fact worshipping dharma itself. In Hinduism, dharma prescribes the moral code of living, thus attaining the possession of law. Since the ancient times, dharma was considered to be the only source of law. The British considered Dharma Shastras to be the civil code of conduct for Hindus in India. It is with much clarity that the Indic faiths such as Hinduism, Buddhism, Jainism, etc. postulate that dharma is the moral duty towards oneself and towards the society. In ancient India, dharma was considered the highest of ideals and embodied an idea of supremacy of law, even the king was subject to it. The Buddhist scripture Vinaya Pitak mentions a case between a prince and a citizen of his states, wherein the ruling was passed in favor of the citizen. The prince duly followed the orders of the court. Everyone, including the king or royalty, were subjected to supremacy of law with all-pervading equality. This permeates into Indian Constitution in Article 14, which provides for equality before law. After the advent of British in India, Lord Macaulay rejected the ancient Indian system, stating that it was completely based on the supremacy of Brahmins over the other castes and did not encase within itself the concept of fundamental rights. He, being an imperial oppressor, however, failed to realize that dharma was the basis of Indian society at all times. With much deftness, slowly and steadily, the British succeeded in striking at the root of our culture, traditions and laws, supplanting them with their own. With the passage of time, Indians became more and more comfortable in the culture and traditions of the British rather than our own. Being suppressed socially, economically and politically, the Indian retaliated against the British by launching a long-drawn freedom struggle that ultimately materialized in 1947. While expressing his protests against the various unjust laws imposed by the British, Mahatma Gandhi emphatically asserted that he was not disobeying the British law to show disrespect, rather he was obeying the higher law of our being, which was dharma. Article 13 of our Constitution lays down the laws which were already made before the existence of the Constitution and are presently inconsistent with the fundamental rights are to such extent void
Similarly, if the laws made after the adoption of the Constitution are not in accordance with the fundamental rights enumerated under Part 3, they will be expressly declared as void. Even though there are no references to Dharma in the Constituent Assembly debates in this regard, the framers of our Constitution perhaps were oblivious to the fact that it is a first Indian concept, only later a Western one. Dharma incorporates supremacy and rule of law. The rule of sovereignty belonged to Dharma and not to the king in ancient times, as even the king was subjected to law. Thus, the concept of Dharma is not different from the modern day of rule of law, which states that be you howsoever high, the law is above you. The rule of law also lays down the duties and obligations a citizen owes to his nation, and Dharma too provided the same. The preamble of the Indian Constitution stipulates that India is a secular state without having any state religion of its own. State is above every religion, and the supremacy of law, that is Dharma, is above the state. Thus, being secular inherently means by not following any religion, we follow the supreme authority, that is Dharma. The Supreme Court of India on numerous occasions has opined that the definition of secularism with respect to all religions is Sarva Dharma Samabha, which means that state has to give equal respect to all religions. Further, it is the concept of Dharma that resulted in Part 3 of the Indian Constitution, consisting of fundamental rights coming into existence. Fundamental rights are available to each and every individual without any discrimination based on gender, religion, caste, race or economic status. This too has its genesis in Dharma, which involves treating everyone in the society equally. Thus, in a way, fundamental rights are the codified version of the rights that people enjoyed in the ancient times. Article 21 of the Constitution enshrines the right to life and personal liberty, stating that no person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. Our judiciary has widened the scope of this article by giving it a broad interpretation. Its ambit has been enlarged to cover the right to live with human dignity and not mere animal existence. Right to livelihood, right to free legal aid, right to dignity of a convict, right to pure air, water and environment, etc. Article 21 covers within its space every aspect which dignifies human life, and Dharma too encompasses these human rights. Again here, Dharma should not be confused with religion. Justice Ansariya in Narayana Dikshidhiru versus State of Andhra Pradesh and others beautifully brings out the differentiation between the two when he says, religion is enriched by the visionary methodology and theology, whereas Dharma blooms in the realm of direct experience. Religion contributes to the changing face of the culture. Dharma enhances the beauty of spirituality. Religion may inspire one to build a fragile, mortal home for God. Dharma perhaps one to recognize the immortal shrine in heart. Now, just to briefly touch upon the international law aspect as well. As far as the conduct of modern diplomacy and international relations is concerned, generally speaking, Machiavelli's book The Prince, written in 1532, is considered to be founding a document on the same. However, after going through Kaudilya's Arthashastra, written more than 1000 years before, the Prince Max Weber, the great German sociologist and Indologist, remarked that compared to Kaudilya's Arthashastra, Machiavelli's The Prince is completely harmless. There is no modern principle of international law and diplomacy that isn't mentioned in our great epics Ramayana and Mahabharata, as well as monumental texts like Kaudilya's Arthashastra and the Tamil saying Thiruvalluvar's Thirukkural. All of us know Ramayana that when Ravana orders his soldiers to behead Lord Hanuman, Vibhushan immediately intervenes. The relevant Chaupai in Ramacharita Naisis Kari Binai Bahuta, Niti Birodh Na Mariye Duta, Andan Kachukariye Gosai, Sabhi Kaha Mandra Bhalipai. Vibhishan requests his brother Ravan that as per Dharma Niti, death penalty can never be awarded to a messenger, that is ambassador. Hence, provision should be made to award some other punishment to Hanuman. Everyone in Ravana's court agreed to this proposition, including Ravana himself. Can you imagine? Even the Rakshasas were so mindful of Dharma and Niti.
This same principle of not awarding capital punishment to ambassadors is applicable today in the form of Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. There are umpteen such principles in our ancient literature that manifest themselves in modern laws. Mentioning all of them would be a never-ending discourse. So in conclusion, dharma and religion are not the same, but it can be said that dharma is the progenitor of religion. The existing laws there in place today, both the national and international levels, do incorporate our dharmic ideals and principles. Thus it can be said that our ancient dharma and our modern laws are intricately woven with each other. What also needs to be remembered is that dharma is never static but dynamic, and only those cultures and civilizations tend to prosper and flourish till eternity, which know when to adopt dharma is in accordance with the change in place, time and circumstances. Hence, a society must be willing to adopt favorable changes in one's beliefs and practices if situation so demands due to lapse of time. To quote Bhishma Pitama from Mahabharata and Disarga, Bhavatya dharmo hi dharma dharma bhuva vahi karana desha kalasya desh kalasya tadrasya. Right and what is right may become wrong. What is wrong may become right, and what is right may become wrong, depending upon the circumstances and place, and the definition of dharma changes with place and time. I once again express my heartfelt gratitude to the Center for Vedic Sciences PH for giving me this opportunity to share my thoughts on this subject. May the beautiful blessings of the Supreme Lord of Universe, Sri Kashi Vishwanath, be upon all of us. Thank you very much. I was reading the message of... थैंक यू सर। मुख्य अतिथि ऐसे कहा, सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजाएं, बदल गया प्रारब्ध। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राजश्री कृत सेवया विदुरबोध अग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनात् ईशस्त्रलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवात् अम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदाम्बुजैः तत्स्यात् अभीष्टप्रदम्। परम सम्माननीयाः मंचस्थाः तत्तद्देशेषु ख्यातकीर्तयः वरिष्ठाः तत्तत्पदासीनाः मंचस्थाः विद्वांसः अधिकारिणश्च एवं एतत् सभागारे समुपस्थिताः विद्वज्जनाः एव अत्र समागताः। अतः संबोधने प्रतिभागिनां संबोधने विद्वत्सम्बन्धे सम्बन्धपदेनैव मया क्रियते। पर सम्माननीयाः इयं या गोष्ठी संयोजकैः व्यवस्थापिता सा अवश्यं राष्ट्रगौरवाय भविष्यति। राष्ट्रीय स्मृतिरेव जायते, यतो हि वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा विधिशास्त्र सम्मत संवादस्य या गोष्ठी जाता तया राष्ट्रे कश्चन विशिष्टं व्याख्यानं समागमिष्यति इत्यत्र नास्ति कश्चन संदेहः। मान्याः जानन्तु एतत् पूर्वं त्रिपाठी महोदयेन उक्तं न्यायशास्त्रे सर्वं विद्यते। अतः यद्यपि समयोपि नास्ति, समयस्यापि अभावः स्वल्पेनैव कालेन समापनीयः इत्यपि आवश्यकम्। अन्यथा स्वकथनम्
उन्मत्त वाक्यवत उपेक्षणीयम च तदेव अस्माभिः वक्तव्यं यत् श्रोतृगणाः श्रोतुम् अभिलषन्ति तत् कथमपि शुद्धं वा भवेत् विशिष्ट व्याख्यान रूपं वा भवेत् वदन्तु वयं समागताः मर्यादा अस्ति अतः मर्यादायाः उल्लङ्घनं न स्यात् उत्थिता न भवेयम् परन्तु शृणुमः नहि इति तु निश्चितं विद्यते। अतः भवद्भिः किञ्चित् उपयोगी तत्त्वस्यैव विचारः विधिशास्त्रेण साकं वैदिकविज्ञानस्य समन्वयः अस्ति। तत्र विधिशास्त्रं विधिविधानं येन क्रियते तदेव विधायकं शास्त्रं तदेव न्यायशास्त्रमपि विद्यते। यतो हि न्याय शब्दार्थः नीयते प्राप्यते विवक्षितस्य अर्थस्य सिद्धि येन शास्त्रेण विद्यते तदेव शास्त्रं न्यायशास्त्र मिति शब्देन क्रियते। विविधं मतं या इदानीं न्यायालयेषु प्रथा व्यवस्था दृश्यते तत्र वादप्रतिवादानाम् उपस्थापनं भवति। प्रथमं निर्णयः भवति कः पदार्थः विवेचनीयः। बहु उट्टङ्कितं वादिना तत्र कं विषयम् अवलम्ब्य विचारः प्रसारणीयः। तत्र प्रथमं तस्य निश्चयः। तदनन्तरं वादिना पक्षः उपस्थाप्यते प्रतिवादिना तत्खण्डनं क्रियते। तत् सिद्धांत खण्डनं कृत्वा द्वयोर्वचनयोः श्रवणं कृत्वा तत्र न्यायाधीशः कञ्चन निर्णयः ददातु एष एव पक्षः अन्यः पक्षः न भवेत्। एवमेव न्यायस्य या परिभाषा सैव न्यायालये प्रयुज्यमाना या व्यवस्था दृश्यते समैवास्ति। अस्माकं महदिदं दुर्भाग्यं यत् अस्मदीय भाषायां विधि विषयकानां विचाराणां कौटिल्यादयः चाणक्य प्रभृतयः महान्तः विद्वांसः अनादिकालतः संजाताः। परन्तु अस्माकं नियमानुसारं आधुनिक विज्ञान दृष्ट्या न्यायालय व्यवस्था चलति वैदिक विज्ञान दृष्ट्या न फलति इति तु अस्माकं दुर्भाग्यमेव इति तु वयं अथ च इदानीं भवतां समक्षं न्याय सिद्धांत विषयिणी चर्चा अथ च न्यायालय विषयिणी चर्चयोः किञ्चित् सामान्यं महर्षि गौतमः प्रथमः आचार्यः न्यायशास्त्रस्य। तेन महर्षिणा सूत्ररूपेण पंचाध्यायात्मकं सूत्ररूपेण विरचितं। तत्र प्रथमं सूत्रं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावय तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्चयेत्। तत्रैव षोडश पदार्थ मध्ये एकः वाद पदार्थः वादी प्रतिवादिभ्यां निर्णीतोऽर्थः सिद्धान्तः। वादी
प्रतिवादी कथनानंतर ऐसा सिद्धांत समीचीना ऐसा सिद्धांत न समीचीना यो ही त्याकारिका स्वयं वाद तत्रापि जल्प वितंड्रा हेत्वाभास शब्द प्रयोग अर्थात जलपा भवतु तावत् भवन्तु यद वदन्तु तद् अहं एवं वदिष्यामि भवतु एवं कथम उच्यते तेन यदि उक्तं तत् खण्डनीयं तदनन्तरं स्वकीय सिद्धांत प्रदर्शनीय परंतु तत्किमपि न जानामि स्वपद्धति न समीचीन एवमेव स्वपक्ष स्थापना हीनो विजन्ना स्वस्य यो हि पक्षः तस्य स्थापना हि मदीयः कोऽपि सिद्धान्तो न नास्ति भवता यत्किञ्चिदुक्तं तन्न समीचीनम् इत्येषः भवता किमुच्यते नरे किमपि न वदामि किमपि नास्ति ईश्वरोऽपि नास्ति जीवोऽपि नास्ति ईश्वर जीवयोः सम्बन्धोऽपि नास्ति एवं रीत्या या पद्धति वितंडावादिना ते अद्यापि शरीरात्मवाद चार्वाक संबंधेन बोधिताः स्वन्तः जीवन्ति अतएव अन्ते चाहं समयस्य अभावात् श्रोतेयाञ्च दर्शनात् इदमेव कथयामि वैदिक सिद्धान्तः सर्व सिद्धान्तापेक्षया श्रेयस्करः अधुनैव विचारितमस्ति यत् वैदिक विज्ञान पद्धत्या आधुनिक विज्ञान पद्धति असमीचीना यतो हि महाभारते एवं इदानीं तत्रैव उक्तमस्ति भो अर्जुन अस्य क्षेपणात्मिका शक्ति विद्यते अवरोधात्मिका शक्ति नास्ति बाणद्वयमपि भवता संग्रही आधुनिके अस्त्रे प्रक्षिप्ते सति तत् अवरोधनमपि अस्माकं कर्तव्यमासीत् सामर्थ्यमासीत् अधुना किं त्वं शब्दवाच्यः आयुधविशेषः प्रक्षिप्तः किं कुर्यात् अद्यापि यूक्रेन पुतिन मध्ये पृथक् अहं क्षेपणं करिष्यामि क्षेपणं तु करिष्यामि अवरोधं कर्तुं शक्यते नहीं महान् संहारः समयति अतः भवतः आशीर्वचनार्थमिच सभा भवता सभागारः प्रकटयति भवते नमामि। आपके आशीर्वाद में यह सभा आपकी आभारी है। आपको सादर प्रणाम। सफल हुआ है कार्यक्रम सफल निहित उद्देश्य आप सभापति मिल गए पोषित हृदय सने बड़े सौभाग्य की बात है। अब इस संपूर्ति कार्यक्रम को अंतिम दिशा की ओर ले जाते हुए मैं प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर से निवेदन करूंगा कृपया आएं और अपने अध्यक्षीय संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। अधिमंचम विराजमानाः मान्याः महनीयाः विद्वांसः सभायां विराजमानाः मान्याः विद्वांसः विदुष्यः प्रतिभागिनः प्रतिभागिन्यश्च तथा च ये संयोजन सदस्याः सन्ति तेषां कृतेपि अभिनन्दनम्। समयाभावो विद्यते सर्वेपि अनुभवन्ति अतः एष कार्यक्रमः अत्यन्तमेव महनीयः विद्यते महत्वपूर्णो विद्यते।
अहं केवलं भगवन्तं विश्वनाथं प्रार्थये यत् अस्य कार्यक्रमस्य सफलता सम्यक् रूपेण जाता, अग्रेपि अस्य कार्यक्रमस्य विस्तारो भवेत्, एतदेव तत्र प्रतिपाद्य विरमामि। धन्यवादाः। अब इस संपूर्ण सत्र की समाप्ति की ओर ले जाते हुए पिछले 2 दिवस में जो विभिन्न पैरेलल सेशन में हमारे पार्टिसिपेंट ने अपना पेपर प्रस्तुत किया है, उन पेपर पर और उन प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता के आधार पर 3 बेस्ट प्रेजेंटर स्टूडेंट कैटेगरी से हमने लिए हैं। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो कृपया आप मंच पर आएं और हमारे अतिथियों से सम्मान प्राप्त करें। फर्स्ट बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटर के रूप में मधुस्मिता देगा, उनका आप तालियों के साथ स्वागत करें। सेकेंड बेस्ट प्रेजेंटर के रूप में इस पेपर की मेरिट के आधार पर तय किया गया है रेवरेंड कदगमन्ना रत्नचारा थेरो श्रीलंका से। यदि यहाँ हो तो कृपया आप आएं। सेकेंड बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटर स्टूडेंट कैटेगरी में रेवरेंड कदगमन्ना रत्नचारा थेरो श्रीलंका। थर्ड बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटर अवनी कृतिका। थर्ड स्टूडेंट कैटेगरी में बेस्ट प्रेजेंटर के रूप में अवनी कृतिका, आप ILI दिल्ली से हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। तीन स्टूडेंट बेस्ट प्रेजेंटर कैटेगरी के अलावा हमने 4 वैल्यूएबल कंसोलेशन प्राइज के रूप में 4 स्टूडेंट्स के पेपर को सिलेक्ट किया है। निशित रंजन चाकी, यदि यहां मौजूद हो तो कृपया आएं। भरत शर्मा, विष्णु प्रिया जी, देवभूति मिश्रा। मैं पुनः एक बार नाम बुलाता हूं। निशित रंजन चाकी, भरत शर्मा, विष्णु प्रिया जी, देवभूति मिश्रा। देवभूति केरला से हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सचिव डॉक्टर अनूप कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ से निवेदन करूंगा, कृपया आएं और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन।
Thank you, Mayankji. Friends, we organized this international conference because we have a vision to transform our contemporary society, not only India but also world. Friends, the entire legal system entirely based on the Western philosophy and Western legal philosophy. The number of scholars already highlighted the pros and cons. The entire jurisprudence includes many schools, but problems still exist. If West have a solution, why we have a problem? Now we have a best technology, now we have a best professional, but rate of crime increasing day by day. Because of this, I am bound to think that there is a need to rethink and think in the light of our roots. Therefore, we organize this conference searching the root of Vedic philosophy and jurisprudence. Friends, my institutions, Banaras Hindu University in general and Center for Vedic Science in particular, realize this fact. My entire organizing team, my student volunteers understand the need of ours. Therefore, they work hard to realize this impossible task. Friends, I am here as a representative of Center for Vedic Science and Banaras Hindu University, and I am confident enough. This is a far-reaching international conference where scholarly developed new idea and vision for future. And I hope that the future of law, and especially the future of Indian law, will based on the outcome of this international conference, because the law scholars, scholar of Sanskrit, scholar of philosophy, scholar of religion, scholar from Sri Lanka, US, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, presented the views, and views are extraordinary, and we are going to transform the entire world, friends. And we have a principle, we have an idea, and in the light of the principle and idea, we will synthesize the thinking of the entire world and cosmos, friends. This conference is not an initiative of 1 or 2 days. Prior 3 years, we organized a workshop in order to understand the subject matter of this conference. We organized and we requested the scholar kindly suggest few words about the Vedic jurisprudence. They suggested. We are working more than 3 hours. The Center for Vedic Science published a great research initiative in the form of a book, Vedic Tradition of Law and Legal System, published by Center for Vedic Science. Friends, we discussed first, then we published a book, then we started a PG diploma course on Vedic jurisprudence, and then we organized this international conference, otherwise not, friends. This conference is the outcome of the last 3-year work, and therefore, friends, we have enough justification for the hard work. Therefore, we work hard. We work hard not because of labor. We have a capacity to put our labor. We have a justification. Our soul suggested us work hard to achieve best, and therefore we work hard, friends. Friends, I am not said anything about the conference and the philosophy of the conference. I am taking some minutes more. Friends, we have a clear idea and vision, and therefore, friends, in the leadership of Professor Brij Kishore Swain, we started working on
development of encyclopedia of Dharma Shastra in relation to the modern law. And friends, we started working before 6 months. An encyclopedia, legal dictionary based on Mahabharata, Puran and Dharma Shastra may be useful for the future law students. We are working. This is a station. This conference is a station, not a destiny. Our destiny is to totally transform the world. This is our task, friends. Friends, philosophers concluded that who we are, what you think, and what is your philosophy. Friends, our philosophy is Vasudhaiva Kutumbakam. Our philosophy is rooted in Upanishad, concluding portion of Vedas, which suggests us the entire knowledge is one and supreme, and therefore, friends, we are searching the soul of the knowledge with the help of Vedic traditions, and therefore we organize this conference, friends. Friends, this time is a formal vote of thanks. I am delighted with the deliberations of the scholars, friends. Scholars from Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka. They represented the best way. The entire students represented the best papers in parallel session, in technical session, friends. Extraordinary, relevant and best deliberation already presented by the young professors, especially assistant professors, research scholars and the law students. And my objective is very clear, to inculcate the idea of Vedic tradition in the mind of young soul and young heart. They are emotional, they have time, and they also have a capacity to put labor in this regards. And therefore, friends, this conference transforms the thinking of the young legal scholars of the India. Therefore, this is useful conference, friends. Friends, मैं काशी में भी हूँ. काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित महामना की बगिया है, और पंडित महामना ने स्वयं कहा था कि प्रतीति प्राची का है मेल सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी. इस विश्वविद्यालय का मूल ही है कि अपने रूट से जुड़ करके भविष्य का निर्माण करना, और वैदिक विज्ञान केंद्र वर्तमान में उसी रूट की तरफ बढ़ता हुआ एक उगता हुआ सूर्य है, जो भविष्य में पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा. मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. आपने वैदिक विज्ञान केंद्र की संरचना की, उसके बीज दिए, और आपके निर्देशन में यह केंद्र इतना पल्लवित है कि मित्रों आप लोग यहां पर हो. अन्यथा अगर एक केंद्र नहीं होता तो चर्चा का कोई प्रश्न नहीं उठता. ऐसे हृदय रंजन शर्मा सर के प्रति मैं अपना कोटिशः प्रणाम निवेदन व्यक्त करता हूं. साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, काशी की विद्युत परंपरा के संवाहक, ऐसे महान आचार्य पद्म भूषण वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी के चरणों में मैं नमन करता हूं. स्वास्थ्य की विषम परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके आपने इस कार्यक्रम की मर्यादा, गंभीरता और विषय की सिद्धता को सिद्ध करके हमें उत्साहित किया, आशीर्वाद दिया. मैं अपना प्रणाम करता हूं, केंद्र की तरफ से प्रणाम करता हूं, और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं. इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर के रूप में मौजूद IKS के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी के प्रति भी मैं अपनी संवेदना और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. मित्रों, बड़ा संयोग की बात है कि वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना और इंडियन नॉलेज सेंटर की स्थापना दोनों में बहुत ही गंभीर जुड़ाव है, और दोनों का बीज मूल मंतव्य भी वही है. और ऐसे महान संकल्पना के केंद्र के राष्ट्रीय समन्वयक को इस कॉन्फ्रेंस के समन्वयक की तरफ से प्रणाम.
मैं आपसे सर आग्रह करूंगा कि आपके सहयोग में, आपके दिशा निर्देशन में हम लोग राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टेंडर की वो सीमा खींच देंगे जिससे कि विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा। मुझे आज मालूम चला कि IKS की फंडिंग है ट्रांसलेशन की। संस्कृत के हमारे पुस्तकों को हम कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम अपने केंद्रों को की पुस्तकों को भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पूरे भारत में जब ये बात उठ रही है स्वभाषा की, स्वपक्ष की, तो स्वभाषा और स्वपक्ष की बात बिना IKS के सहयोग के संभव नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि वैदिक विज्ञान केंद्र जो कि आपके जड़ से जुड़ा हुआ है उसको आपका सहयोग सर मिलेगा। सर सादर प्रणाम सर। इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पन्नालोका के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप श्रीलंका से आए, बहुत मेरी वार्ता हुई। Without in a tough schedule, he managed time, and the best thing is the extraordinary presentation in session, friends. The extraordinary presentation. He focused on critical thinking. Everything is fine. I'm very thankful, sir. I'm very thankful. Friends, इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ राजा वल्लभ त्रिपाठी सर भी थे। उनकी उपस्थिति से हम लोग गौरवान्वित होते हैं, मंच गौरवान्वित होता है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं इस केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त और अपना स्नेह व्यक्त करता हूं। मित्रों, यद्यपि कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, लेकिन जो सहयोग आपने हम लोगों को दिया, पूरा ऑफिस ताला सहित हम लोगों को पिछले 6 दिन से हैंडओवर था, पूरी संपदा हैंडओवर थी। मैं उस विश्वास को प्रणाम करता हूं और उस विश्वास के लिए मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अन्यथा आयोजन तो आपका है और आयोजन के लिए तो आयोजन सचिव को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ महान वक्ता जुड़े, हमारे साथ प्रोफेसर बृजकिशोर स्वाइन सर जो धर्मशास्त्र के क्षेत्र में एक महान विभूति हैं। मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा नमन करता हूं। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला सर, पिछले 3 महीने से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, विचार में, विमर्श में आपका जो सहयोग प्राप्त है उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्रन के प्रति जो आप केरल से हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर, आप आए, आपने पेन लिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर पुष्प कुमार जी, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन, एक्सलेंट कोऑपरेशन फॉर कॉन्फ्रेंस, थैंक यू। सुंदर नारायण झा जी, विकेश जी और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से जस्टिस शंकरन सर, सिंप्लिसिटी मैंने सर, आई एम ब्लेस्ड विथ योर सिंप्लिसिटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू, आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर DP वर्मा सर, our guide, and for the cooperation and for the blessing, I am very thankful sir, I am very thankful। इस सभागार में हमारे बहुत सारे अध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, हमारी फैकल्टी के छात्र हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। मैं केंद्र के कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं और उनसे माफी मांगता हूं। पिछले 5-6 दिनों में मेरा आचरण ठीक नहीं था, मैं इतने टफ टास्क में था, मैंने थोड़ी आवाज की अपनी क्रूरता को बढ़ाया था। उसके लिए मैं केंद्र के कर्मचारियों से सभागार में हाथ मारकर क्षमा मांग लेता हूं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। दूसरा, मैं अपने वॉलेंटियर्स के प्रति कृतज्ञ हूं। कृतज्ञता से बड़ा शब्द मेरे जीवन में मुझे पता नहीं है। कृतज्ञता का मतलब रेसिप्रोसिटी नहीं होती है, मैं आपका कर्ज उतार नहीं सकता। आप लोगों ने जितने भाव से श्रम किया है, ये वैदिक विज्ञान केंद्र का परिवार आपके प्रति आभारी है, कृतज्ञ है। सभी वॉलेंटियर्स को मेरा प्रणाम है। और हमारे केंद्र और हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर मयंक प्रताप जी, जो कि पूरे एकेडमिक सत्र के दौरान जो आपने सत्र का संचालन किया है, आई एम थैंकफुल सर, आई एम वेरी थैंकफुल। डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य सर, behind the screen do everything, I am thankful sir, I am thankful। और सर्वाधिक प्रणाम का अगर कोई पात्र है तो ये प्रतिभागी समूह है। All the participants of this conference, the most hectic schedule,
I never experienced such kind of academic discourse and discussion. I participated more than 50 conferences. From 10 a.m. to 10 p.m. last day. From 10 a.m. to 10 p.m. today. From 10 a.m. to 8 p.m. I am thankful, friends. I am thankful for your presence. This conference is a wonderful conference. And I think that you feel proud because you are earning certificate, because I am very rigid in context of certificate also. And आप भूल नहीं पाओगे, जिंदगी में बहुत कॉन्फ्रेंस करोगे, लेकिन वैदिक विज्ञान केंद्र और वैदिक विधिशास्त्र का कॉन्फ्रेंस किसी को भूलेगा नहीं। यह मेरी विडंबना है। विश्व के समस्त शक्तियों के प्रति अपनी संवेदना, अपने प्रणाम को निवेदन करता हूं। काशी विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे संबल दें। यह एक पड़ाव है। दिस इज अ स्टेशन ओनली, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। दिस कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स आइडिया फॉर फ्यूचर वर्क। दिस कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ फॉर फ्यूचर वर्क। एंड देयरफॉर I need blessings. I need blessings from the scholars' presence of the dais and on the dais. I have a great objective to transform the India, and therefore need of blessing and need for blessing. Blessing of scholars, blessings of Lord Shiva, Kashi Vishwanath and Param Brahma Parmeshwar. सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। और ये अनूप जी का हौसला ही है कि इतना अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी उन्होंने आयोजित किया। उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन आपको ये मालूम भी है और आप ये महसूस भी कर सकते हैं कि उस पूरे आयोजन के पीछे अगर कोई की है, अगर कोई डायरेक्टर है, अगर कोई करता धरता है तो है अनूप जी। हम सभी की तरफ से अनूप जी को बहुत सारा आभार।